Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Welcome to the online support program. This is Hafsa, your chemistry teacher from APS Thamyal. In this week we are going to start chapter number 13 named as biochemistry. Bio stands for life, so biochemistry means the study of chemistry of life. In this lecture we will discuss introduction to biochemistry, carbohydrates, classification of carbohydrates, sources of carbohydrates, and uses of carbohydrates. So, what is biochemistry? Basically, biochemistry is the study of life or chemistry of life. And life requires energy, and energy is stored in substances such as carbohydrates, proteins, and lipids. And we need these compounds for existence. For proper nutrition, our diet should include balanced proportion of carbohydrates, proteins, and lipids. And we also need adequate amount of vitamins, minerals, and fibers. Some compounds found in every living cell serve as the information and control center of the cell, and they have ability to reproduce, store, and transmit genetic information. So mainly हमारा कंसर्न इस चैप्टर में उन बेसिक केमिकल कंपाउंड्स के साथ है या उन मॉलिक्यूल्स के साथ है कि जो लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो हम सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट. Most abundant class of the organic compounds and general formula is CxH2O whole Y. This formula suggests that the carbohydrates are hydrates of carbon with few exception. Hydrate of carbon means कि कार्बन है और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. सो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स वाटर की टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दैट have numerous hydroxyl groups attached. मीन्स कि मोनोमर है या पॉलीमर है जिसमें एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है और उसके साथ मल्टीपल हाइड्रोक्सल यानी OH ग्रुप अटैच्ड है. Carbohydrates are synthesized in a process called photosynthesis that occurs in plants. Plants use this reaction or use this process to for the survival of their life. They produce their food by this process. In this reaction, carbon dioxide react with water in the presence of sunlight and chlorophyll and produce C6H12O6, that is glucose, and oxygen is produced as a byproduct. So this byproduct is very useful for the survival of other living organisms like human beings and animals. So glucose, starch, and cellulose are examples of carbohydrates. Classification of carbohydrates. Carbohydrates are classified as monosaccharide, oligosaccharide, and polysaccharide. First class is monosaccharide. They are simplest carbohydrates, cannot be hydrolyzed. General formula where N is, the general formula is CH2O whole N, where N is 3 to 6 कार्बन एटम्स. मीन्स कि जो इसका फॉर्मूला है उसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो 3 से लेके 6 तक हो सकते हैं. Further classified as trioses, tetroses, pentoses, and this classification is based on the number of carbon atom. Tri means 3 carbon, tetroses mean 4 carbon, pentoses mean 5, and hexoses mean 6 carbon. सो 3 से लेके 6 तक कार्बन्स हो सकते हैं. द मोस्ट फेमिलियर मोनोसेक्राइड्स आर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6. दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट द डिफरेंस इज glucose is a pentahydroxy aldehyde. Aldehyde means CHO group is present at one end, and pentahydroxy means 5 hydroxyl group. And fructose is a pentahydroxy ketone. Pentahydroxy means 5 hydroxyl group and ketones means कि ketonic group present है. So both are simple sugars and open chain structures are. अगर इनके open chain structures देखे जाएं तो वो ये वाले हैं. इनमें हम देख सकते हैं कि ग्लूकोज में 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं और एक एंड पे CHO
यानी एल्डिहाइड ग्रुप है। इन सेकेंड ये देखें C डबल बॉन्ड O, सेकेंड कार्बन जो है वहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप अटैच है और उसके दोनों साइड पे कार्बन्स हैं। And 5 hydroxyl groups are attached to this whole molecule. So this is glucose and this is fructose. So main difference is one have aldehyde group and other has ketonic group. Characteristics of monosaccharides. Some monosaccharide molecules can rotate the plane of plane polarized light to right and they are called dextrorotatory or dextrose sugar. Dextro stands for right or clockwise, and if we are talking about left or anti-clockwise then we use word levorotatory. सो जो कुछ मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, मीन्स वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट करते हैं. ग्लूकोज, मेनोज, गैलेक्टोज आर डेक्स्ट्रोज शुगर्स एंड मोनोसेकेराइड्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. दे आर सॉल्युबल इन वाटर. दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड एंड रिड्यूसिंग इन नेचर. हाइड्रोलाइज्ड या हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है? हाइड्रोलिसिस इज द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ कंपाउंड ड्यू टू reaction with water. Second class is oligosaccharide. Carbohydrates which upon hydrolysis form 2 to 9 molecules of monosaccharides are called oligosaccharides. मेन कि अगर इनकी हाइड्रोलिसिस परफॉर्म की जाए या इनको वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए तो ये ब्रेक डाउन हो के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बेसिकली मोनोसेक्राइड्स होते हैं. ये सिंपल शुगर्स होते हैं और इनके नंबर कितने हो सकते हैं यानी ये 2 से लेके 9 तक स्मॉल यूनिट्स यानी मोनोसेक्राइड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनोसेक्राइड यूनिट्स. बेसिकली इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड होती है ऑन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स दैट दे प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलिसिस. मीन जब ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये जितने नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूज़ करते हैं तो उसकी बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया जाता है. मीन्स अगर एक ओलिगोसेक्राइड मॉलिक्यूल है और वो 2 मोनोसेक्राइड को प्रोड्यूस कर रहा है अपॉन हाइड्रोलिसिस देन दिस इज़ कॉल्ड डाई. इफ़ इट इज़ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स देन इट इज़ कॉल्ड ट्राई. सिमिलरली डाई, ट्राई, टेट्रा ये प्रीफिक्सेस इनके लिए यूज़ किए जाते हैं. दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड दे आर स्वीट इन टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर. सो अगर इनके हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखे जाएँ तो हम देख सकते हैं कि सुक्रोज इज़ अ डाइसेक्राइड. वाई इट इज़ डाइसेक्राइड? बिकॉज अपॉन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूसेस अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड फ्रुक्टोज एंड दीज बोथ आर मोनोसेक्राइड. ठीक है, सो ये 2 मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस कर रहा है देन दिस इज कॉल्ड सुक्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज. इन्वर्टेज इज एन एंजाइम. इन द सेकेंड maltose. Maltose is also a disaccharide and this produces glucose and glucose means 2 ग्लूकोज यूनिट्स प्रोड्यूस करता है जब इसकी हाइड्रोलिसिस परफॉर्म होती है इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज. एंड थर्ड इज़ लैक्टोज. लैक्टोज क्या होती है? लैक्टोज इज़ बेसिकली मिल्क शुगर या मिल्क के अंदर पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है. सो इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज एंजाइम it produces 1 glucose and 1 galactose monosaccharide upon hydrolysis. The third is polysaccharides. Carbohydrates which upon hydrolysis form 10 to 1000 units of simple sugars are called polysaccharides. अब अगर वो 10 से लेके 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं मोनोसेक्राइड्स तो तब हम उसको पोलीसेक्राइड्स बोलेंगे. पोली मीन्स many और जो ओलिगो वर्ड था दैट इज़ यूज फॉर फ्यू. सो पोली मीन्स मैनी. स्टार्च एंड सेलुलोज आर पोलीसेक्राइड्स. सो पोलीसेक्राइड्स की एग्जांपल क्या है? स्टार्च एंड सेलुलोज. These are amorphous solid, they are tasteless, they are insoluble in water and non-reducing in nature. Reducing का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएं और दूसरे कंपाउंड्स को या दूसरे मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करवा दें. खुद ऑक्सीडाइज हो जाएं, दूसरों को रिड्यूस करवा दें. बट ये जो पोलीसेक्राइड्स हैं दीज आर नॉन रिड्यूसिंग यानी कि दूसरों को रिड्यूस नहीं कर पाते. The next is sources of carbohydrates. Carbohydrates are the most abundant classes of carbon containing compounds. They have varied sources. Monosaccharides such as glucose, fructose and galactose are obtained from fruits, vegetables and cereals and they are also present in honey.
Disaccharides such as sucrose is obtained in sugarcane, sugar beet, and fruits. Maltose is found in cereals, and lactose is main sugar in milk and dairy products. Cellulose is obtained from plants. Cotton is pure cellulose. Starch is present in cereals, wheat, barley, rice, maize, potato, and sweet potato. Uses: carbohydrates store and transport energy in both plants and animals. 1 gram of glucose provides us 15.6 kg of energy, and they serve as food source for most organisms. Carbohydrates serve as structural material for plants. Cellulose in the human diet is referred as fiber. It is found in bran, whole meal bread, fruit, and vegetables. We cannot digest it, but it is very important for us. It helps the muscle of our intestine to move food efficiently through the digestive tract, and it absorbs and carries away toxic chemicals in food that would otherwise harm us. It also helps in lowering cholesterol and regulates blood pressure. The next use is sucrose is used as common table sugar. Glucose is stored in animal muscles and liver cells in the form of glycogen. Glycogen serve as the long-term energy reservoir, means stored form में present रहती है. It can be converted back to glucose when needed for energy. इसको दोबारा से ग्लूकोज नहीं, क्योंकि बॉडी जो है उसको ग्लूकोज की फॉर्म में यूज़ कर सकती है. सो जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो तब इसको कन्वर्ट बैक टू ग्लूकोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लांट स्टोर एक्सेस एनर्जी एज स्टार्च, and starch is used to make rectified spirit by fermentation process, and starch is converted to dextrin, which is useful as an adhesive for stamps and as a wallpaper glues. Cows, cattle, goats, deer, sheep, and termites derive nutrition from cellulose. We use cellulose in the form of wood for heat, housing, and furniture. Wood is also used to make paper and wood pulp, and cellulose fiber of cotton is used to make rayon and cellulose acetate, which are used in textile industry for making clothes. Society, technology, and science. 5% mass by volume aqueous solution of dextrose sugar is used in drips. 5% means कि 5 ग्राम dextrose sugar dissolve in 100 centimeter cube of वाटर. ठीक है, मीन्स 5 ग्राम जो है वो इतने वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन बन जाए. देन इसको इंट्रावेनसली दिया जाता है पेशेंट्स को. सीवियरली डिहाइड्रेटेड का मीन्स कि जिसके अंदर पानी की शदीद कमी हो जाए, और इज़ अनेबल टू ईट और इज़ नॉट अलाउड टू ईट, या ऐसा पेशेंट जिसको जो खा पी ना सकता हो या जिसको खाना पीना मना किया गया हो. As the world population is increasing, the demand for food is also increasing. To grow more crops, new methods and techniques are used. Protein deficiency leads to physical and mental retardation. Excess lipids or fats may lead to heart diseases or a stroke, cancer, diabetes, and other health problems. The nutritional chemists recommend that no more than 30% of your daily caloric intake comes from the fat. Healthy crops means much more intake of fat is unfit for health. Healthy crops, fruits, and vegetables are necessary for our proper growth and health, and so both agricultural and nutritional sciences are vital for us. You have to learn the full lecture and also write the lecture except uses, sources, and science and technology. Remaining सारा lecture आपने लिखना है. This is all from my side. Thank you so much.